In this video, I will give a brief introduction of coding and decoding, and I will explain how to solve the problems of कोडिंग एंड डीकोडिंग। तो इस वीडियो में मैं कोडिंग और डीकोडिंग के बारे में आपको बताऊंगा और कुछ उदाहरणों के द्वारा ये समझाऊंगा कि अगर इस तरह के प्रश्न जिसमें कोडिंग या डीकोडिंग पूछी गई है उन्हें हम कैसे हल करें। कोडिंग, the process of writing a letter, word, sentence in a code language is called coding. A particular code or pattern is used to express a word or to express it in different words or in different forms. The coded word itself does not make any sense unless we know the code. That is, unless we use a pattern or code that has been followed. किसी अक्षर, शब्द, वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं। किसी शब्द को व्यक्त करने या उसे अलग-अलग शब्दों या अलग-अलग रूपों में व्यक्त करने के लिए एक विशेष कोड या पैटर्न का उपयोग किया जाता है। कोडेड शब्द का तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक कि हम कोड को न जानें, यानी जब तक हम किसी पैटर्न या कोड का उपयोग न करें जिसका पालन किया गया हो। Well, these are some examples of coding. So here we have explained how the alphabet of English, that is from A to Z, can be numbered. We can arrange these numbers in two ways. First of all, in increasing order. That means we can provide 1 for A, 2 for B, 3 for C, and so on up to Z. That is 26 for Z. And other way, we can use them in descending order. That means we can provide 26 for A, 25 for B, 24 for C, and so on up to 1 for Z. So this is serial in increasing order, and this is reverse serial. So we can use these numbers instead of these letters. This is called coding. And similarly, if something is written in English, we can translate it in Hindi or Urdu. So using other languages for one language is also a type of coding. Similarly, we can write some numbers for the word. For example, we have written creator. So C is third number. So we provide 3 for C, 18 for R, 5 for E, 1 for A, 20 for T, 15 for O, 18 for R. And similarly, we can provide some symbols for different words. For example, for rose, we have taken this flower. For player, we have taken a ball. For transport, we have taken a van. And for blind, we have taken one cut eye. तो इस तरह से हम देखिए कोडिंग कर सकते हैं। ये कोडिंग करने के कुछ तरीके मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे कि इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है, इनके जो अक्षर हैं, उनको अगर एक बढ़ते क्रम में लिख दिया जाए, तो 1 से लेके 26 नंबर तक इनको दिए जा सकते हैं। और अगर हम घटते क्रम में यानी रिवर्स सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे, तो A को 26 दे देंगे, B को 25 और इसी तरह घटते क्रम में लिख दिया जाए और Z को 1 दे दिया जाए, तो ये भी कोडिंग कहलाएगी। यानी हम कोई भी शब्द ले लें, उसकी जगह जैसे यहाँ मैंने क्रिएटर में दिखाया है, सी के लिए 3 ले लिया, आर के लिए 18, ई के लिए 5, ए के लिए 1, टी के लिए 20, ओ के लिए 15, आर के लिए 18। यानी जो भी इसमें सीरियल ऑर्डर नंबर है हर अक्षर का,
वो यहाँ पे इस अक्षर की जगह लिख दिया। तो ये तरीका किसी चीज को लिखने का जो है, ये कोडिंग कहलाता है। और इसी तरह नहीं, बल्कि हम अलग अलग नामों को अलग अलग संकेतों से भी दर्शा सकते हैं। जैसे रोज के लिए हम ये फूल ले लेंगे, प्लेयर के लिए एक बॉल ले लेंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए एक गाड़ी ले लेंगे, अंधे व्यक्ति यानी ब्लाइंड के लिए हम एक आंख जिस पे कट का निशान है वो ले सकते हैं। तो ये सारा तरीका जो है, इस तरह का और भी बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दिए हैं मैंने। तो ये कहलाता है कोडिंग। Decoding, the process of converting a letter, word, sentence written in a code language into its original or actual meaning, is called decoding. Decoding refers to the process of arriving at an equivalent word from the code word given. In the question, a particular code is given, and on the basis of this given code, we have to find out how to code other words. The correct code for the given word has to be selected from the answer choices on the basis of the code given in the question. किसी सांकेतिक भाषा में लिखे अक्षर, शब्द, वाक्य को उसके मूल या वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डीकोडिंग कहते हैं। डीकोडिंग से तात्पर्य दिए गए कोड वर्ड से समतुल्य शब्द तक पहुंचने की प्रक्रिया से है। प्रश्नों में एक विशेष कोड दिया जाता है और इस दिए गए कोड के आधार पर हमें ये पता लगाना होता है कि अन्य शब्दों को कैसे कोड किया जाए। दिए गए शब्द के लिए सही कोड को प्रश्न में दिए गए कोड के आधार पर उत्तर विकल्पों में से चुनना होता है। Well, as we have discussed earlier, the English alphabet can be assigned two types of serial numbers, one in ascending order and one in descending order. The first one is called the simple serial number, and the other one, this one, can be called as reverse serial number. So on this basis, if Kamal has been assigned this code and Radha has been assigned this type of code, so what is the word for which the code is this one? So the answer is Samruddhi. So after studying these codes, we have found that this code is given for Samruddhi. So this is the way how we decode the given code and find the word for which this code was assigned. So this kind of process is known as decoding. तो इस तरह से देखिए हम जानते हैं कि अल्फाबेट को दो तरह के नंबरों से पहचाना जा सकता है। एक असेंडिंग ऑर्डर जिसको सीरियल नंबर कह सकते हैं, और दूसरा अगर ये नंबर्स उल्टे कर दिए जाएं और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसे हम रिवर्स सीरियल नंबर कहते हैं। तो अगर इस तरह से दो लोगों को अलग अलग कोड दिए गए हैं, मान लीजिए कमल को इस तरह से कोड दिया गया है और राधा को इस तरह का कोड दिया गया है, तो पूछा गया है व्हाट इज द वर्ड फॉर विच द कोड इज रिटन। तो इस तरह का कोड ये किसके लिए है, यानी इस कोड से हमें क्या पता चलता है कि किस वर्ड को एक कोड दे दिया गया है। तो इस तरह से छानबीन करने का, ये पता लगाने का तरीका कि ये कोड किसके लिए होगा, ये तरीका जो है वो डी कोडिंग कहलाता है। तो इस कोड को
पता लगाने के बाद अगर हमें पता चला द आंसर इज कमरुद्दी, तो दिस प्रोसेस बाय विच वी फाइंड आउट, यानी वो तरीका जिससे हमने पता लगाया कि ये कोड कमरुद्दीन का होगा, ये तरीका ही डीकोडिंग कहलाता है। Illustration number 1. In a certain code language, if the word rejection is coded as SGMIHZPWW, then how is the word mechanic coded in the same language? एक निश्चित कूट भाषा में यदि शब्द रिजेक्शन को SGMIHZPWW के रूप में कोडेड किया जाता है, तो उसी भाषा में मैकेनिक शब्द को किस प्रकार कोड किया जाएगा? एंड द आंसर्स आर A NG FL FT PK, B NG PL FT PK, C NG FK FT PK, D NG AT PK IL. So these four options have been given and we have to select the right code for mechanic. So the given word is rejection and the code given is SGMIHZPWW. So as we observe, S is the next letter to R. So in the English alphabet, S comes after R, just next the letter. So if we add 1, we get S. And if we take G, it comes E, F, G. That means 2 letters next to E. Similarly, M, which comes after J, J, K, L, M. That means just 3 letters next to J comes M. Similarly, I comes after E after 4 letters F, G, H, and then I. Similarly, H comes 5 letters after C. D, E, F, G, and then H. Similarly, Z comes after T after 6 letters. U, V, W, X, Y, and then Z. That means Z is the 6th next letter after T. P. So after I, we get J, K, L, M, N, O, and then P. That means P is the 7th next word to I. W, which comes after O after 8 letters. That is P, Q, R, S, T, U, V, and then W. That means W is the 8th next letter. Similarly, we get W after N after 9 letters. O, P, Q, R, S, T, U, V, and then W. That means W is the 9th next letter. So we'll apply the same pattern in the word given. That means mechanic. तो इस तरह जैसे हमने देखा R के बाद S जो है अगला अक्षर है, E के बाद G दूसरा अक्षर है, J के बाद M तीसरा अक्षर है, E के बाद I चौथा अक्षर है, C के बाद H पांचवा अक्षर है, T के बाद Z छठा अक्षर है, I के बाद P सातवां अक्षर है, O के बाद W आठवां अक्षर है, N के बाद W नवां अक्षर है। तो इसमें अंग्रेजी की जो
वर्णमाला है उसमें जिस क्रम में ये रखे गए उससे हमने ये कैलकुलेट किया, ये हमने गणना की कि ये कितने अक्षर बाद आया है। इनका हमें पता चल गया। अब यही पैटर्न जो है हम दिए हुए शब्द मैकेनिक में लगाएंगे। यानी यहाँ पे भी एम के बाद एक लेंगे तो एन आएगा, ई के बाद एफ, फिर जी, सी के बाद डी, ई, फिर एफ, तो ये तीसरा अक्षर हो गया। एच के बाद आई, जे, के, एल, तो ये चौथा अक्षर हो गया। ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, तो एफ पांचवा अक्षर हो गया। एन के बाद टी, यानी ओ, पी, क्यू, आर, एस, फिर टी, यानी छठा अक्षर हो गया। आई के बाद जे, के, एल, एम, एन, ओ, फिर पी, यानी सातवां अक्षर हो गया। सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, यानी आठवां अक्षर के। तो जो पैटर्न हमने ऊपर यूज किया था वही यहाँ भी यूज किया। So as we see, N is the next letter to M, G is the second letter to E, F is third letter to C, L is fourth letter to H, F is fifth letter to A, T is sixth letter to N, P is seventh letter to I, K is eighth letter to C. Therefore, the right code is NGFLFTPK, which is in the order A in the given question. So, as we had seen the question, so NGFLFTPK. So, A was the right choice. So, NGFLFTPK, that is A, and it is the right choice.